गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। मैं इसके तिवारी, आईएएस रिटायर्ड। डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी अभ्यर्थीगण की सफलता के निमित्त एवरी डे एट 7:30 ओके, सिविल सर्विसेज एकेडमी झारखंड, देवघर झारखंड के सौजन्यता से तो उद्देश्य है आपकी सफलता। और ऑन मंडे वी टेक अप पॉलिटी and international relations. On Tuesday, we take up history, art and culture. On Wednesday, we take up economy. And Thursday, that is today, geography, India and world. And then on Friday, science and technology, Vikas Prajapati, very good evening. And on Saturday, we take up the Sakshi, very good evening. So the CSAT, and sometimes we discuss miscellaneous questions, dear aspirants. And on Sunday, specifically, we take up the current affairs. So, uh, this current affair is also very, very important. As far as GS paper 1 is concerned, dear aspirants, out of 100 questions, you will find at least 20 to 25 questions related to almost all sections, but current. Okay, so you may ask me, how can you find questions in history segment? Okay, current. So you might have gone through the Khiladi, Rakhigadi, and Sinoli. So these are the three places where the excavations are going on. Excavations are going on. Then the second approach, that the WHS, World Heritage Site. So if some of the historical sites are included in WHS, then that will become a part of question. They may put a question in a form of MCQ as far as the prelims examination is concerned, and they may also go for the detailed analytical view, okay, elaborative view, discuss, elaborate, analyze type of questions as far as the mains examination is concerned. So there is sufficient scope of the current affairs in history as well as almost all subjects, segments. So let us start with some important questions in Indian geography. While I discuss Indian geography, you might have gone through the drainage system of our country. So last year, Mr. Alam, good evening. Last year uh, we had some important questions. Kailash Prasad ji, very good evening. So with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream, Prayagraj from west to east, which one of the following sequences is correct? So this is PYQ 2024. PYQ 2024. And just, okay, at the end of this class, you may be able to visualize, okay, conceptualize rather the pattern of UPSC. What is the pattern? Okay, so with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream, okay, of Prayagraj from west to east, which one of the following sequences is correct? A. Ghagra, Gomti, Gandak, Kosi. B. Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi. C. Ghagra, Gomti, Kosi, Gandak. And Gomti, Ghagra, Kosi, Gandak. So ABCD type of questions, and dear aspirants, you have to put your answer. तो इसमें आपको आंसर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा. So Sakshi belongs to Bihar. Mr. Alam also belongs to Bihar. So you may be able to answer this question, dear aspirants. So are you able to answer this question? So Gomti, Ghagra, Gandak, and Kosi. This is the correct, okay, option, okay, with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east. Yes, Kailash ji, B is the correct answer.
Gomti, Ghagra, Gandak, and Kosi. So this is the correct answer. Now we find a similar question. Okay, during the previous year, that is 2024, consider the following information: waterfall, region, and river. Number one, Dhondhar region, Malwa river, Narmada. Second, Hundru region, Chota Nagpur and river Suvarna Rekha. Third, Jarsopa region, Western Ghats and river Netravati. In how many of the above rows is are given information correctly matched? A only one, B only two, C all three, and D none of these. So dear aspirants, यदि आपने पता है तो आप इसको बता सकते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ये पिछले वर्ष के प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था और वहीं से ये मैं इसलिए इन प्रश्नों को आपके समक्ष रख रहा हूं सो दैट आपको पैटर्न की जानकारी हो जाए. व्हाट इज द पैटर्न? किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है, डियर एस्पिरेंट्स. सो यस, 2 is correct, that is Hundro. So this is the only correct answer. So our answer should be only one. A should be, because Hundro, you all know, this is Chota Nagpur and Subarna Rekha. Subarna Rekha is the correct river. Okay, correct river. And as far as Jarsopa, okay, so what is the spelling? GERSOPPA. GERSOPPA. Okay, so it is it is in Kannada district. Okay, in Karnataka. Kannada district in Karnataka, dear aspirants. So Jog Falls. Okay, North Uttar Kannada, that is north, and the region is Kannada. It is not, okay, the region is Kannada. So I think this is the only correct choice is Hundru, Chota Nagpur, Suvarna Rekha. So this is not correct. And Dhuvandhar, that is Malwa Narmada, this is also not correct. Dhuvandhar, okay, this is also not correctly matched, dear aspirants. So Dhuvandhar, okay. So Dhuvandhar waterfall is located on Narmada. Okay, this is correct. This is correct. Dhuvandhar Falls, located on Narmada River, in the correct answer. Okay, river, Narmada River, Bheda Ghat, Bheda, Bheda Ghat, and are 30 meters high. The Narmada River, making its way through the world famous marble rocks, narrows down and then plunges into waterfall known as Dhuvandhar. The plunge, which creates a bouncing mass of mist, is so powerful that a roar can be heard from far distance. Okay, so this is Dhuvandhar. Now, the next is, we should also check up this.
because sometimes you find that the answer is incorrect mentioned. Okay, so let us test check this one. Yes, so this waterfall, yes, uh, this waterfall is a waterfall located in Ranchi district in Indian state of Jharkhand. It is the 34th highest waterfall in India. Okay, and Hundru Falls is located on Subarnarekha River. It is a significant waterfall in Ranchi district, and uh, this is the Hundru Fall is waterfall located on Ranchi Purulia Highway, state of Jharkhand in the Chota Nagpur plateau. So our answer is only two. So Dhuvandhar, Malwa, Narmada, and Hundru, Chota Nagpur, Suvarnarekha, both are correct. Both are correct, dear aspirants. Both are correct. छठी सिविल सेवा झारखंड आज का पेपर में दिया. Okay, so two are correct. Wonderful, Mr. Alam. Your answer is correct. So I tried my level best to study the question deeply. So, dear aspirants, now let us see some more questions related to Indian drainage system. Indian drainage system. Now, consider the following statement about various drainage patterns. Number one, the radial pattern develops where the river channel follows the downward slope of the terrain. Second, the trellis pattern develops where hard and soft rock exist parallel to each other. The third statement, a dendritic pattern develops when streams flow in different directions from a central peak or dome-like structure. Which of the given above statement is are correct? A12, B13, C2, and D123. Dear aspirants, now you will have to find out the correct answer related to this very question. If you are knowing the answer, you should write it in the chat box. So the correct answer to this question is, dear aspirants, C. That is two only. Okay, C is the answer. A trellis pattern develops where hard and soft rocks exist parallel to each other. Statement 1 is incorrect because a radial drainage pattern forms when streams radiate onward from a central point, typically found on conical hills, volcanic cones, or domes. And the third statement is also incorrect because a dendritic drainage pattern resembles the branching pattern of tree roots and typically forms in areas with uniform rock type. In contrast, a radial pattern is what forms when streams flow outward from a central peak or dome, not dendritic. So this is the correct, okay, answer. So our answer is C. That is only second statement is correct. Now, dear aspirants, we have some more questions. Consider the following statement about the Indus River. Okay, recently, what happened? The government of India has uh, put the Indus Treaty between India and Pakistan in abeyance. So, we may think that a question related to Indus River, okay, you may find there in the prelims examination as well as the mains examination. Consider the following statements about Indus River. Number one, Jhelum is the largest tributary. Yes, Parsuramji, very good evening. Jhelum is the largest tributary. What is the meaning of tributary? Sahayak Nadi of Indus River. Second, Satluj is an antecedent river and fits the canal system of Bhakra Nangal project. और तीसरा, ब्यास river flows through the Kullu Valley and form gorges in
Dhauladhar range. Dhauladhar range. So how many of the given above statement is are correct? A only one, B only two, C all three, and D none. So dear aspirants, now you will have to find out the correct answer. और परशुराम जी आज कुछ विलंब हुआ तो only two statements are correct, and these two statements are second and third. The first statement, Jhelum is the largest tributary. This is not correct because Chenab is the largest tributary. Chenab is the largest tributary. So B is the correct answer, dear aspirants. Chenab is the largest tributary of Indus. It is formed by two streams, the Chandra and the Bhaga, which joins at Tandi near Kilong in Himachal Pradesh. Hence it is also known as Chandrabhaga. तो ये भी आपको जानना होगा, चेनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं. The river flows from 1180 kilometer before entering into Pakistan. So रिवर से तो एक क्वेश्चन इनएविटेबल है निश्चित रूप से. तो ये हमारा आंसर इसका बिल्कुल मिल गया. बी इज द आंसर. द फर्स्ट स्टेटमेंट, झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. दिस इज नॉट करेक्ट. चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ओके, ऑफ इंडस रिवर. सो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से आपने ड्रेनेज सिस्टम पर जो इनएविटेबल, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, तो उस पर आइए देखें इंडियन क्लाइमेट से संबंधित कैसे प्रश्न आ सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर. नंबर 1 लैटिट्यूड, नंबर 2 अल्टीट्यूड ऊंचाई, नंबर 3 ओशियन करंट, नंबर 4 डिस्टेंस फ्रॉम द सी. हाउ मेनी ऑफ द गिवन अबव फैक्टर्स इज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट. भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उनमें से जो कारक ये हैं, कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं. हाउ मेनी ऑफ द गिवन अबव फैक्टर्स इज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट. ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3 एंड डी ऑल 4. पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है अल्टीट्यूड, तीसरा है ओशियन करंट और चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डियर एस्पिरेंट्स, नाउ प्लीज आंसर कीजिए, चैट बॉक्स में बताइए whether the answer is A, B, C, D is the correct answer. Mr. Parasuram ji and Mr. Alam, both are correct. All the four सारे के सारे प्रभावित करते हैं. लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, अल्टीट्यूड का मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, नंबर 3 ओशियन करेंट्स, समुद्री जलधारा, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी. तो ये इसका आंसर. यस साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट. यस कैलाश प्रसाद जी, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट. तो आपने जलवायु से संबंधित भी एक प्रश्न लिया. आइए देखें, इफ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट. मान लीजिए कि अब ये इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछ सकता है. टेक फॉर एग्जांपल, यू हैव टेकन ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओके, ऐच्छिक विषय के रूप में आपने ज्योग्राफी को ले लिया. क्या होगा? जैसे एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, मोहम्मद आलम का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, जैसा कि मुझे स्मरण आता है. अब अथवा हो सकता है जो हमारे एक और आलम है जो हमारे यहाँ कोचिंग में आते हैं, तो उनका ऑप्शनल हो सकता है वो ज्योग्राफी हो, या ये मोहम्मद आलम जी गुरु जी. यस, ग्रेट. तो मुझे स्मरण है. तो यहां पे ये प्रश्न इस तरह का आ सकता है इंटरव्यू में भी. डियर एस्पिरेंट, इंटरव्यू नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट. सो इफ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट, मान लीजिए कि हिमालय होता ही नहीं, अस्तित्व में नहीं होता, तो क्या होता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली हैपन. तो इनमें से क्या होता? नंबर 1, इंडिया वुड नॉट हैव पेरेनियल रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. पेरेनियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल? पेरेनियल का मतलब नहीं सूखने वाला, जिसमें वाटर हमेशा रहे, पेरेनियल. अब पेरेनियल वर्ड, इट मे बी यूज्ड नॉट ओनली रिलेटेड टू वाटर. ये किसी भी संदर्भ में इसका प्रयोग हो सकता है. ये कोई जरूर नहीं कि पानी के लिए हो, ओके.
टेक फॉर एग्जाम्पल, कोई हाट है, ग्रामीण हाट है, बाजार है, और गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करती है और लगातार करती है, हर साल करती है, पेरेनियल। ओके। अगर कभी कभी करते, कोई कटहल का पेड़ है, कोई महुआ का पेड़ है, महुआ का पेड़ भी यदि वो सरकारी जमीन में है तो ऑक्शन होगा, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा डियर एस्पिरेंट्स। तो पेरेनियल कब होगा? जब पेड़ में हमेशा फल आएगा। ओके। कोई आम का बड़ा बड़ा बगीचा है, पेरेनियल। तो पानी के ही संदर्भ में नहीं, बल्कि लगातार के संदर्भ में पेरेनियल। सो डियर एस्पिरेंट्स, इंडिया वुड नॉट हैव पेरेनियल रिवर्स, मतलब नहीं सूखने वाली नदियां जैसा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं होती। सेकेंड, डेजर्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया वुड एक्सपैंड फर्दर ईस्टवर्ड। जो डेजर्ट है भारत के पश्चिम में, वो पूरब की तरफ एक्सपैंड करता। थर्ड, द इंडियन ओशियन मॉनसून सिस्टम वुड रिमेन अनअफेक्टेड। और चौथा, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वुड नॉट हैव फर्टाइल अलुवियल सॉइल। जो भारत का उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, तो वहां पर उपजाऊ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, वो नहीं होती। सो व्हाट शुड बी द आंसर? ए 1 2 1ली, बी 2 3 1ली, सी 1 2 4 and D 1 3 4 1ली. So dear aspirants, 1 2 4 1ली is the correct answer. इसमें तीसरा जो है, the Indian Ocean monsoon system would remain unaffected, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड अदर हिमालयन रिवर्स आर सस्टेन्ड बाई स्नो मेल्ट, मतलब बर्फ के पिघलने पर, मतलब ग्लेशियर पर ये नदियां जीवित है डियर एस्पिरेंट्स इन द हिमालयाज। विदाउट द हिमालयाज these rivers would not have continuous source of water, making them non perennial। तो ये नदियां जो है वो नॉन पेरेनियल हो जाती है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। व्हाई डू आई से? बिकॉज द हिमालयाज act as a natural barrier preventing the cold and dry winds from Central Asia from extending into India. In their absence, the arid conditions of the Thar Desert would expand eastward, leading to more desertification in northern and central India. Statement 3 is incorrect. The Himalayas play a critical role in trapping the moisture-laden southwest monsoon winds, causing them to release rainfall over the Indian subcontinent. Without the Himalayas, the monsoon system would weaken, affecting rainfall patterns. So, dear aspirants, statement 4 is correct, because the northern plains of India are formed by alluvial deposits brought by Himalayan rivers. Without the Himalayas, these fertile plains would not exist. तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर 1 2 4 है डियर एस्पिरेंट्स, और इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सो आपने देखा कि थर्ड स्टेटमेंट, जो इंडियन ओशियन मॉनसून अनएफेक्टेड, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्लाइमेट से ही, और तब आगे बढ़ेंगे डियर एस्पिरेंट्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ जेट स्ट्रीम? डिफाइनिंग फीचर ऑफ जेट स्ट्रीम। सो डियर एस्पिरेंट्स, वी हैव ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन। A, high altitude fast moving winds found in the troposphere. B, low altitude slow moving winds near the earth's surface. And C, seasonal winds confined to tropical regions. And D, local winds restricted to specific valleys or mountain ranges. So dear aspirants, इसका उत्तर क्या होगा ये आपने बताना है। So the correct answer to this MCQ is A. A is the correct answer. A, high altitude
fast moving winds found in the troposphere. ओके, सो जेट स्ट्रीम की जो विशेषता है ये क्या है? हाई अल्टीट्यूड, फास्ट मूविंग विंड्स फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर। ये हो गया। अब आइए, एक लाइन आपको लिखना चाहिए जो मैं बोलूंगा। जेट स्ट्रीम्स, यस, स्टार्ट कीजिए, आर हाई अल्टीट्यूड, कॉमा, फास्ट मूविंग bands of winds located in the upper troposphere, typically at altitude of 9 to 16 kilometer. They occur due to the temperature gradient between equatorial and polar regions, which creates a pressure difference driving these strong winds. Dear aspirants, what is the speed? Jet streams can exceed speeds of 200 km per hour and are westerly in nature, flowing from west to east. Now they significantly influence global weather system, including the Indian monsoon and western cyclonic disturbances. So option A is the correct answer regarding, ओके, डिफाइनिंग फीचर ऑफ जेट स्ट्रिप्स। तो विश्वास है आपने इसको समझ लिया होगा। अब इसी में जेट स्ट्रीम में एक और क्वेश्चन बनता है, एसटीडब्ल्यू। एसटीडब्ल्यू तो उसको भी नोट कर लीजिए। एसटीडब्ल्यू, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट विंड्स, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट विंड्स। सो डियर एस्पिरेंट्स, with reference to STW, consider the following statement. Number one, these are narrow belts of high altitude westerly winds in the troposphere. Second, these are located over 2730 degrees north latitude. And third, these blow north of Himalayas all throughout the year except in summer. So select the correct answer from the quotes given below. A 1 only, B 2 only, C 2 3, and D 1 2 3. So what should be the answer to this important question? Dear aspirants, STW. Now let us find. Second statement is correct. Okay. Why do I say? Because the subtropical westerly jet streams are high altitude, fast moving. Yes, wonderful. B is the answer, Mr. Alam. Westerly winds that flow from west to east in the subtropical regions of the Earth's atmosphere, typically between latitude 20 degree and 35 degree north and south. These jet streams play a significant role in shaping weather patterns, particularly in the Indian subcontinent, and are crucial for the Indian monsoon system. Statement 1 is incorrect. Okay. Statement 2 is correct and statement 3 is also incorrect. Okay. Dear aspirants, why do I say statement 1 incorrect? Because subtropical westerly jet streams are narrow belts of high altitude westerly winds in the troposphere. TROPOS, troposphere, not stratosphere. And the third statement, over India, these jet streams blow south of the Himalaya all through the year except in summer. So, dear aspirants, we find this question well explained. अब एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष हम रखेंगे, साउदर्न ओसिलेशन। इसको भी समझना जरूरी है। With reference to the southern oscillation, OSCI, LLATION, consider the following statement. Number one, it refers to the periodic reversal of pressure differences between eastern and western tropical Pacific. Dear aspirants, the second statement is, it is always associated with the El Nino phenomenon. अब ये जैसे हिस्ट्री सेगमेंट में जैनिज्म बुद्धिज्म का स्थान है, ज्योग्राफी सेगमेंट में अल नीनो और ला नीना, ये दो ठो तो आपको पढ़ना ही होगा। डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट अस सी,
With reference to the southern oscillation, consider the following statements. Number one, it refers to the periodic reversal of pressure differences between the eastern and western tropical Pacific. Second, it is always associated with the El Nino phenomenon. Third, positive values of SOI is indicative of La Nina conditions. So, which of the given above statements are correct? A 1-2 only, B 1-3 only, C 2-3 only, and D 1-2-3. So, dear aspirants, now we will have to uh, find out the correctness. Okay, so the second statement is not correct. First and third statements are correct. Why do I say the second statement is not correct? Because the southern oscillation is not always associated with the El Nino phenomenon. While negative values of southern oscillation index SOI typically indicate El Nino conditions, positive values indicate La Nina conditions. Okay. Now something more. The first statement is correct because the southern oscillation refers to the periodic reversal of atmospheric pressure differences between the eastern and western tropical Pacific Ocean. It is a critical component of the El Nino southern oscillation that is also known as ENSO, ENSO. ENSO cycle affecting global weather pattern. As far as the third statement is concerned, dear aspirants, positive values of SOI indicate stronger trade winds and higher pressure in the Eastern Pacific, which are typical of La Nina conditions. So our answer should be B, that is 1 and 3 statements are correct. 1 and 3 statements are correct. तो इस प्रकार से आपने देखा। एक और हम क्वेश्चन लेंगे इसी पर। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेनन, निम्नांकित जो स्थितियां हैं उस पर विचार करें। नंबर 1, आर्कटिक वार्मिंग। ओके। नंबर 2, अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, एनसो, जस्ट वी हैव रेड इट। एंड थर्ड, नॉर्थ अटलांटिक oscillation, NAO. So how many of the above can affect the precipitation of northwest India? A, only 1, B, only 2, C, all 3, and D, none. So dear aspirants, as far as okay the answer is concerned, yes Mr. Parsuram, C is the correct answer. Okay, all 3 is the correct answer. Okay, affecting precipitation in northwest India. ये तीनों के तीनों इसके कारक हैं। Arctic warming, how far it is responsible? Because it can influence the jet streams, which in turn impact the trajectory and intensity of western disturbances, a critical factor in winter precipitation in northwest India. The changes in jet stream patterns caused by Arctic warming can lead to an increase or decrease in precipitation. Dear aspirants, as far as ENSO is concerned, El Nino events often suppress the activity of western disturbances by altering atmospheric circulation patterns, leading to reduced winter precipitation in northwest India. Now, the North Atlantic oscillation, NAO, okay, it affects the position and intensity of the westerly winds that carry western disturbances into northwest India. So this is the full explanation of this question. And dear aspirants, while you will go through the PYQs, you will find El Nina, La Nina, and ENSO. Okay, such type of questions are there. So today I have concentrated upon the drainage system of India. Now one thing more, as far as the drainage system of India is concerned, one more vulnerable area, that is important area, is linking of rivers. Linking of rivers. So next time I will
take up. Okay, I will select that question as well. So, dear aspirants, we have आधे घंटे का सफर हम लोगों ने समाप्त किया बड़ी कुशलता से। आप लोगों ने बड़े अच्छे मन योग से आंसर दिया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास डियर एस्पिरेंट्स। चेष्टा है मेरी लगातार कि आपकी सफलता हो, सुनिश्चित हो, और जो कुछ भी आप पढ़ें निश्चित रूप से आप उसे ध्यानस्थ कर लें, आत्मसात कर लें। डियर एस्पिरेंट्स, यूपीएससी की तैयारी एक समयबद्ध टाइम मैनेजमेंट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ होनी चाहिए। एनसीईआरटीज बेस है। एनसीईआरटीज को 2 बार 3 बार पढ़ें, और जब ये पढ़ें तो सिलेबस और पीवाईक्यूज डेली पढ़ें। एक न्यूज़पेपर द हिंदू, प्रेफरेबली योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, और एक बुक इंडिया ईयर बुक, अपडेटेड इंडिया ईयर बुक डियर फ्रेंड्स। और इस दौर से जब आप गुजरेंगे तो आप देखेंगे एवरीथिंग इज क्लियर। इतना करने के बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स की ओर जाएं। डियर एस्पिरेंट्स, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, आर एस शर्मा, ओके, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, 1 and 1, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, एनवायरमेंट शंकर IAS, इकोनॉमी रमेश सिंह, ज्योग्राफी माजिद हुसैन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रवि अग्रहरी। डियर एस्पिरेंट्स, बाकी क्या रहा? करंट अफेयर्स, वो तो आप दी हिंदू पढ़ रहे हैं, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहे हैं, इंडिया ईयर बुक पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ CSR कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, और वो नहीं है PD प्रतियोगिता दर्पण, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये आपका सोर्स मटेरियल है, और इसी सोर्स मटेरियल पे आप बेस करके आगे बढ़े। जब मेंस की तैयारी होगी तो उसमें पॉलिटी में DD बसु को ऐड ऑन करना होगा, और इसी तरह से एड ऑन कहां कहां करना होगा ये मेंस के आसपास। बट बेस यही है। इस बेस को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए फलदायी होगा। डियर एस्पिरेंट्स, यदि आप PYQs राइट सिंस 2011 देखते हैं, सिलेबस को अपनी पकड़ में रखते हैं, तो फिर यह परीक्षा आपके लिए निश्चित रूप से सफलता का एक नया पैगाम होगा। यू आर डेस्टिन्ड टू क्रैक UPSC, that is IAS. So thank you for joining me in such a good number, dear aspirants. कल मिलते हैं, फिर मिलते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हैं। कल ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आने वाली परीक्षा में संभावित होंगे। So thank you. Let me say good night to all of you. Bye bye.